Lecture 26 Conventional Indexing Techniques 26.1 Need for Indexing Speed. When you search for something on your computer using the Find tool in Windows, it looks through all the files on your hard drive. This can take a long time, even if you don't have many files on your computer. To find out how many customers are in Karachi, you can either go through every single row in the database, which can take a long time, or you can create an index that specifically looks at the city field to quickly find the answer. A database administrator will need to create and update this index regularly. To find out how many people in Karachi made phone calls in April. To do this, it has to look at two different tables. One with the calls and the dates they were made, and another with information about customers and where they live. This takes a long time and is called a table join. Average call charges of customers in Karachi during the month of April. A database administrator can make it easier by creating a summary table to handle this type of question. Need for indexing. IO bottleneck. अगर आप ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर भी कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कर देते हैं तो भी ये डेटाबेस से जो रिकॉर्ड्स स्लोली एक्सेस होते हैं इस मसले को सॉल्व नहीं करता है। अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव और पावरफुल सर्वर्स भी यूज करते हैं, तब भी हार्ड ड्राइव स्पीड इशू रहता है। To solve this problem, people often create an index of the data, which helps to quickly find the information needed without having to read the entire database each time. Storing the entire database in the computer's memory can also help, but it can be very expensive. 26.2 Indexing Concept. Indexing is purely a physical database concept and is not related to the way data is organized and structured logically in the database. In fact, an index should be completely invisible to someone who is doing the programming on the database. Optimizer knows the best time to use the index. Imagine a library with a lot of books. If you need to find a specific book, it can take a long time to search through every book until you find it. This is like searching through data without an index. However, if the books are sorted by title, you can use the index to quickly find the book you need. So on average, if there are n books in the library, how long does it take? It will take n or n2 on average. So it is an O(n) algorithm for accessing the data. Card catalog is like an index in a database. It helps you find books easily by organizing them by author, topic, or title. Indexing goal. The point of using an index is to increase the speed and efficiency of searches of the database. 26.3 Conventional indexes. Basic types: sparse, dense, multi-level, arbitrary, primary index versus secondary indexes. Dense index concept, इसमें आपकी डेटा फाइल को उसको ब्लॉक की सूरत में डिवाइड कर दिया जाता है और एक इंडेक्स टेबल बनाया जाता है और हर एक ब्लॉक की एंट्री इंडेक्स के अंदर कर दी जाती है, यानी इंडेक्स एक फिजिकल एंटिटी है। Dense index. Every key in the data file is represented in the index file. इसमें 1-to-1 correspondence है इंडेक्स फाइल के बीच में और डेटा फाइल के बीच में। Dense indexing बहुत ही एफिशिएंट है इसलिए कि जो भी ब्लॉक्स हैं उनकी एंट्री इंडेक्स में मौजूद है। जो भी ब्लॉक चाहे डेटा फाइल का आपने डेंस इंडेक्स को देखा और वहां स्लिप हो जाएंगे डेटा फाइल के अंदर। जैसे कि पीछे हमने कार्ड कैटलॉग की हमने मिसाल देखी थी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि डेंस इंडेक्स टेबल इटसेल्फ इतना बड़ा हो जाता है कि उसे सर्चिंग में बहुत टाइम लग जाता है और हो सकता है डेंस इंडेक्स टेबल इतना बड़ा हो जाए कि मेन मेमोरी में ना आ सके। इस पास इंडेक्स सेव्स स्पेस बट टेक्स ए बिट मोर टाइम टू लोकेट ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग इट्स की। Sparse index, advantages or disadvantages. In a sequential file, the first value in each block is stored along with a pointer to the block.
This method takes up less space than a dense index. ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो कि आपने सर्च करनी है उसके लिए आपको फर्क टाइम लग सकता है। ये टेक्निक स्पार्स इंडेक्सिंग की ही एक मॉडिफिकेशन है। 26.4 बी ट्री इंडेक्सिंग can be seen as a general form of multi-level indexers. B-tree indexing में आप एक मल्टी-लेवल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। जनरलाइज यूजुअल बाइनरी सर्च ट्रीज BST स्पार्स मल्टी-लेवल इंडेक्स B-tree इसकी जनरलाइजेशन है। हर एक नोड का ब्रांचिंग फैक्टर 2 का होता है। इसके कुछ मसाइल भी हैं। अगर आप बाइनरी सर्च ट्री को प्रॉपर्ली बैलेंस ना करें तो फिर बाइनरी सर्च ट्री F1 चेन में तब्दील हो जाता है। तो फिर ये एक चेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जिस चीज को भी आपने तलाश करना है उसके लिए आपको पूरी चेन में सर्च करना पड़ेगा। Allow efficient and fast exploration at the expense of using slightly more space. Popular variant बी जुमा ट्री। जब हम बी ट्री की बात करते हैं तो बेट्स का मतलब है कि ये एक बैलेंस ट्री है। हर नोड का फासला रूट से बराबर होता है। सेलेक्ट सितारा फ्रॉम आर वे बराबर 11 सेलेक्ट सितारा फ्रॉम आर वे 0 इससे कम बराबर बी एंड बी इससे कम 42। बी ट्री में आप ऊपर से लेकर नीचे तक सर्चिंग करेंगे और लीफ पर जाकर उसकी वैल्यू को गेट कर लेंगे। अगर आपने रेंज बेस्ड सर्चिंग करनी है बी ट्री की नोड के अंदर कीज को अरेंज किया जाता है। अगर आपने कोई रेंज बेस्ड सर्चिंग करनी है तो बी ट्री के रूट से स्टार्ट होंगे और आप उन कीज तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपका डिजायरेबल आंसर पड़ा हुआ है। ये वो कैवरीज हैं जहां पर बी ट्री बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बी ट्री indexes are the most common index type used in typical OLTP applications. Used in both OLTP and data warehouse applications, B-tree indexes improve the performance of queries that select a small percentage of rows from a table. B-tree indexes are like a map that helps you find things faster. The map is organized like a tree. The smallest branches at the bottom are called leaves. There are two common types of indexes used in databases, B-trees and hashes. Indexes are like maps that help find specific information in a table. Index is a way to find information quickly in a table. B-tree indexing. Limitations: using a B-tree index to speed up database queries may not work well, especially when dealing with columns that have only a small number of unique values, such as in a data warehouse. In these cases, creating a bitmapped index can greatly enhance query performance. However, B-tree indexes are not suitable for searching through text or names because they are case-sensitive and require exact matches from left to right. 26.5 Hash-based indexing. You may recall that in internal memory, hashing can be used to quickly locate a specific key. Using a technique called hashing can help find a specific thing quickly in a computer's memory. The same technique can be used on external memory. Hash-based indexing. Concept. Hash-based indexes do not sort index values in a specific order like B-tree indexes do. A hash scan requires an exact match of a key value. It's extremely fast and efficient as long as the exact value, typically a number, is known. A hash scan is a quick way to find information using specific numbers. But it can be difficult for people who don't know these numbers off the top of their head. For example, many people don't know their bank account number by heart. This can make it hard for them to access their account information easily. Primary index. प्राइमरी इंडेक्स में आप हाश करके एक टेबल में चले गए और उस टेबल में एक पॉइंटर था आपके डेटा फाइल के ब्लॉक की जानिब, वो आपको आगे लेकर जाएगा। अगर हम कार्ड कैटलॉग की मिसाल लें तो आप एक कार्ड कैटलॉग, तो हमें पता है कि ये एक मैकेनिज्म है जो आपको एग्जैक्टली उस कार्ड तक ले जाएगा जिसमें उस किताब का एड्रेस पड़ा हुआ है। यह है प्राइमरी इंडेक्स। सेकेंडरी इंडेक्स।
इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कार्ड कैटलॉग को पॉइंट किया जो आपको पॉइंटर देता है डेटा फाइल के रिकॉर्ड तक जाने के लिए, बल्कि इसमें जो पॉइंटर होता है वो भी एक सेट ऑफ पॉइंटर की तरफ जाता है, वो फिर आगे जाकर पॉइंट करता है उस रिकॉर्ड को जिसकी आपको तलाश है। B-tree versus hash indexes. A B-tree index is a type of tool that helps us find information in a database. It is better than a different type of tool called a hash scan because B-tree can find information even if we only have part of the information we need. It also sorts the information it finds. If you want to search on range basis, then B-tree is the good choice. The hash scan tool is faster if we already know exactly what we are looking for. A B-tree index is a tool used to help find information faster. Usually, people remember their name better than a number. It's better than having no way to search by name at all. नाम से तलाश करने का कोई तरीका ना होने से बेहतर है। Primary key voracious. Primary index. Primary key. A primary key is always unique and is used to identify a specific record in a database. However, a primary index may or may not be unique. In a decision support system environment, most queries are not based on the primary key, they are based on primary index. Primary indexing. Criterion. A DSS query is when you ask a computer to find information for you. To make this faster, the computer puts the information in a specific order called an index. But sometimes the information you want is not unique, so the computer has to use a different type of index. This can cause problems if there are too many entries, because the computer may have to spend extra time looking for the right information.